દિવસ ગરમીથી રાહત પ્રાપ્ત થશે અને તાપમાનને લઈ હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી છે। 2 દિવસ બાદ તાપમાન વધશે અને 2 દિવસ બાદ 2 થી 3 ડિગ્રી તાપમાન વધશે। તો ઉત્તર પશ્ચિમ તેમજ ઉત્તરના પવન ફૂંકાયા છે। ઉનાળાને લઈ હવામાન વિભાગનું પૂર્વાનુમાન તેમજ ઉનાળામાં મહત્તમ અને લઘુત્તમ તાપમાન સામાન્ય કરતાં ઊંચું રહેશે। आने वाले 7 दिनों के लिए जो गुजरात स्टेट के लिए फोरकास्ट है उसमें आने वाले 7 दिनों में ड्राई वेदर प्रिवेल करेगा। और मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करेंगे तो आने वाले 2 दिनों में मैक्सिमम टेम्परेचर में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट का पूर्वानुमान है। उसके बाद मैक्सिमम टेम्परेचर नो लार्ज चेंज में रहेगा और मिनिमम टेम्परेचर आने वाले 5 दिनों के लिए नो लार्ज चेंज में रहेगा। और मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर रियलाइज की बात करेंगे तो अहमदाबाद में जो मैक्सिमम टेम्परेचर रियलाइज है वो 36.6 रियलाइज हुआ है और गांधीनगर में 36। और अहमदाबाद और गांधीनगर के मैक्सिमम टेम्परेचर की फोरकास्ट करेंगे तो फोरकास्ट की बात करेंगे तो आज के लिए दोनों जगह के लिए 36 डिग्री सेल्सियस का मैक्सिमम टेम्परेचर का फोरकास्ट है। राजकोट में हचमचावी दे तेवा अकस्मातना सीसीटीवी फूटेज सामे आव्या छे। केवड़ावाड़ी विस्तार में स्पीड ब्रेकर थी उलटता अकस्मात सर्जायो हतो, जेमां 14 वर्षीय सगीरनुं मौत निपज्युं छे। रात्रिना समये अकस्मातनो बनाव बन्यो हतो। बाइक में सवार 2 युवको पूरपाट झड़पे आवी रह्या हता त्यारे वीज पोल साथे અથડાતા अकस्मात सर्जायो हतो। अकस्मातनी समग्र घटना सीसीटीवी कैमेरामां कैद थई छे। केवड़ावाड़ी खाते बनाववामां आवेला स्पीड ब्रेकरना कारणे आ अकस्मात सर्जायानुं स्थानिकोए जणाव्युं छे। स्थानिक वेपारीओए पण कह्युं हतुं के स्पीड ब्रेकरनी कोईपण जरूरियात न होवा छतां खूब ज ओछा गाळामां 2 स्पीड ब्रेकर बनाववामां આવ્યા છે તેમજ સ્પીડ બ્રેકર બનાવ્યા બાદ તેના ઉપર સફેદ પટ્ટા પણ લગાવવામાં નહોતા આવ્યા। आ घटना बनी है स्पीड ब्रेकर ना कारण बनी है। एक छोकरो ऑफ थई गयो है अने एक छोकरा ने वधारे लागी गयो है ने सिविल में दाखल करेलो है। શું કારણ લાગી રહ્યું છે બેન ઘટના? સ્પીડ બ્રેકર ના કારણે ખબર નથી કે એવો ચિંતા ને એક દી में स्पीड ब्रेकर बनाई नाख्यो। अले अचानक ज आवता ता थांबला में गड़ी गयो मारो भाई। एक भाई तो ऑफ થઈ ગયા, एक भाई तो दवाखानाમાં છે। એને હાથ ફ્રેક્ચર, પગ ફ્રેક્ચર, માથામાં ટાંકાની બધું આવ્યું। બનાવ તો એવું લાગે છે કે આ સ્પીડ બ્રેકર ના હિસાબે જ બનેલો। અચાનક રાતોરાત સ્પીડ બ્રેકર ઉભા થઈ જાય તો એ તો કોઈને નો ખબર હે ને। ઈ છોકરા બી અમારા એરિયાના જ હતા એટલે એને ખબર જ હોય કે અહીંયા કાંઈ છે જ નહીં રાતના, અને રાતના સ્પીડ બ્રેકર દેખાતા બી નથી।